Vilas, let me come to you with the question of, trade and the market that Ravinder has already touched upon. Let's speak about those tariffs and the threats coming in. From the Indian picture, what are the discussions that are going to be on the table and how beneficial is it going to be in terms of the tariffs which are going to be imposed by the Trump administration? Yeah, thank you, Sakshi, and thank you, panel team, and good morning to India and good evening for America. And welcome, Modi ji, to USA, Washington, D.C. We are eagerly waiting, and the reality came. And congratulations to US President Trump, and now welcoming to the Indian Prime Minister. Yeah, definitely trade and tariff negotiations discuss reducing tariffs on Indian goods and resolving the trade disputes. That's the main topic for this one. And there are strengthening bilateral relations, enhance diplomatic and ties between India and the US. That is more important. And technology sharing, business partnership, and other energy security and countering China's influence. My friend already Ravi mentioned strengthening strategic partnership in the Indo-Pacific. So these bilateral relations is very important, and there are two biggest countries. Democratic countries, India and US. So meeting the President and Prime Minister of India, Modi ji. So this is a very good news, and these results will fruitful, and employment and other things will come to the matter. So initial days, Trump is saying that America first. So Modi ji is saying that India make in India and everything. So it's a win-win situation for both countries, bilateral, and biggest is the democratic countries. Two nations are waiting, and all the people are very eagerly waiting for the good news. And as mentioned, Ravi, that is a true. Illegal means, see, wherever the news comes, I know the Indian more people are upgrading the situation, but the fact is who are legally coming. So from the visa, they are taking the positive, they are coming. Students and parents and H1B visa, all people, L1, L2, all immigrants are coming properly. They don't have any issue. Here also the problem is who are illegal, who cross the border, and especially the problem is who are doing criminal activities. Those are the target for Trump, not for regular people who are coming regular. See, if any visa is expiring, you have to leave the country. That is anywhere, this is a process of America, anywhere. The problem is who are illegally staying and they are doing criminal activities, they need to go back. Who is any country. So he's not targeting one country. He's saying politely, and he's in the announcement of the elections also, he announced properly, who are illegal, I will send to back. So the thing is only afraiding our people, the Indian community. So no need to afraid this, and this is a good news come. So this is a table, and may come, may not come. But already Jaishankar ji, when Jaishankar ji came on the ceremony for the Trump, so he mentioned clearly. So it's a bilateral, it's a good thing. And also Jaishankar ji mentioned clearly in the situation when it comes. So the good news is, if you observe, Indian Prime Minister never visits swearing in ceremony. Instead of Jaishankar ji was sent to behalf of Bharat. We all know how much high importance was given to our external minister Jaishankar ji. So this Modi and Trump are very good friends. In fact, Trump always praised Modi's leadership compared to the Democrats. I mean, we are not differentiating with the Democrats or any parties, but just stating the tariffs will be discussed in this trip. Modi also emphasized AI in France trip. Everyone knows France president came out of the and way to send off Modi after the AI summit. Now Trump also is giving more good relationship with Trump and Modi. So it is good for nations, both nations. Thank you, Sakshi. Yes, please stay on with us. We are being joined by our colleague Manish Jha. Also, he is joining us live straight from Washington, D.C. Manish, again, a good morning from me and a good evening to you. Please tell us what exactly is happening there on the ground, the kind of rousing, welcome the Prime Minister has received specifically for Donald Trump's second tenure this time around. किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियोस देखे, मोदी मोदी लोग चैंट कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उनके देश में.
देखिए, इसके बावजूद कि बर्फबारी हो रही है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ है तो दैट वुड नॉट बी रॉन्ग। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी 9 की टीम इस वक्त आपको दिखाना चाह रही है कि अभी क्या हो रहा है और इसका असर क्या होने वाला है। उस वक्त जब न्यूज़ 9 के हमारे तमाम ऑडियंस अभी सोकर उठे होंगे, उन्हें नहीं अंदाजा होगा कि बीते कुछ घंटों में दुनिया कितनी बदल चुकी है। तो इसका नज़ारा हम कैमरे के जरिए ही दिखाना चाहते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये ब्लेयर हाउस है जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी अभी ठहरे हुए हैं, और इसके ठीक सामने जो आप व्हाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं वही व्हाइट हाउस है। मतलब 200 मीटर का फासला है। तो आप समझ सकते हैं कि यही ब्लेयर हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ओथ लेने से पहले अपनी पत्नी मिलानिया ट्रंप के साथ ठहरे थे। ये प्रेसिडेंट का ऑफिशियल गेस्ट हाउस है और प्रधानमंत्री मोदी को यहीं ठहराया गया है। दूसरी बात यह है कि अब जबकि मोदी और ट्रंप की मीटिंग होगी, उससे पहले जिस तरीके से ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है, जिस तरह से ट्रंप ने पुतिन को वॉशिंगटन आने का न्योता दिया और जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि वो मॉस्को जाएंगे, ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका इस ग्लोबल ऑर्डर में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अब जानकार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप कहें तो ग्लोबल ऑर्डर की रीशेपिंग हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक एक्सिस बन रहा है मोदी, ट्रंप और पुतिन की, यानी 3 मस्कीटियर्स यहां पर दिख रहे हैं। और इन सब का कॉमन एक जो आप कहें कि चैलेंज है, वो है चीन की घेराबंदी करना। और देखिए, जब ट्रंप और पुतिन ने बात की तब उन्होंने कहा कि अगेन ये समय आ गया है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह एक बार फिर रशिया और यूएस साथ आ जाए। तो आखिर रशिया और यूएस किसके लिए साथ आएंगे, और फिर जब साथ आएंगे तो उसमें भारत की क्या भूमिका होगी। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी, तो न केवल इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप और उससे संबंधित जो इश्यूज हैं, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, H-1B वीजा का हो, या फिर ग्रीन कार्ड का हो, या दूसरे और डिफेंस डील की हो, लेकिन इन सब से अलग जो एक ग्लोबल ऑर्डर की बात है, जो इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को रोकने की बात है, उसको लेकर चर्चा होगी। और जो बात आज तक आप और हम सोच नहीं सकते थे। जरा सोचिए, 1 महीने पहले क्या आप कल्पना कर सकते थे कि प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिका आएंगे, लेकिन वही मुल्क अमेरिका है, वही व्हाइट हाउस है, बस प्रेसिडेंट केवल चेंज हो गया। बाइडेन की जगह ट्रंप आए, ट्रंप ने पुतिन से बात की, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को यहां बुलाया, और आज की तारीख में अगर आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ओनली हेड ऑफ स्टेट who is talking to President Putin, President Zelensky, President Macron and President Trump. So you can imagine that what India is going to play in the global order. Absolutely, Manish. Thank you so much for joining us and sharing all of those details straight from outside of the Blair House, of course, where Prime Minister Modi is currently staying. I would like to thank all of our guests, Ravi, Ravinder and Vilas, for joining us early this morning according to the Indian Standard Time and putting your perspective across, of course. Let's take a look at all of the visuals that we have collected straight from the ground when Prime Minister Modi came to Washington, D.C. and received a rousing welcome as well from the public.